Is getting a job without a job description and with no degree, no skills, nothing. मैं जाके ऑफिस में बैठ गया पहले कि अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा इस ऑफिस में करते क्या है यार ये लोग, ये कंपनी करती क्या है. ये पूरे कोर्सेज बिक रहे हैं यार कि हाउ टू बिकम वायरल, डू दीज थिंग्स टू बिकम वायरल. माई प्रॉब्लम हाउएवर विद दैट इज, if you're actually doing this to improve yourself or just try to figure out what you're passionate about, leave the phone aside, go do it. You want to try singing, try singing. बैठ के गा, किसने मना किया? फोन क्यों उठा रहा है? My two advices would be YouTube ASAP, because it's a search engine, longevity is much higher, easily monetizable. Second would be harness the gold mine. Your content is good, keep at it, chhodna mat. And the best way to keep at it is to batch. So the reason I said this, and I'll just add to that, is because best way ना कोई बताएगा नहीं, वो खुद implement करेगा. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. आज हम एक फोर्ब्स 30 अंडर 30 की एक अलग पर्सनालिटी देखेंगे. जब भी हम फोर्ब्स मैगजीन में किसी को भी देखते हैं, वी इमेजिन अ वेरी सीरियस पर्सन, somebody who just talks business. But today we have somebody who talks storytelling as well. Tirthak, who's now an Instagram content creator and has been working with startups for the longest time, has been a startup co-founder himself. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन करी अराउंड कंटेंट, लाइफ, दिल्ली से यूएस कैसे गए, यूएस से फिर वापस दिल्ली कैसे आए. बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है. एंड हाउ डिड ही लैंड अप इन द फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट फॉर डूइंग समथिंग दैट वेरी फ्यू पीपल हैव इवन ट्राइड. तीर्थक की जो लाइफ स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि कोई भी इस एपिसोड को देखेगा दे विल फील एम्पावर्ड. और काफ़ी लाइट रखा है इस कॉन्वर्जेशन को. ये कॉन्वर्जेशन काफ़ी रात को रिकॉर्ड हुई थी व्हेन बोथ ऑफ अस हैड एंडेड आवर वर्क, एंड दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट चिल कॉन्वर्जेशन दैट आई हैव डन टिल डेट. आई होप यू लाइक दिस वन. यार बहुत ही फैंसी वैंसी बाय द वे ये होटल इनका. क्या है ये फैंसी होटल, कैसे पैसा कमाते हैं इतना ये फैंसी होटल आने वाला? मतलब मेरे ऐसे लोग होते हैं जो हायर किए जाते हैं बाय फैंसी कंपनीज एंड उनके बीच में बात हो जाती है कि भाई पैसा दो. आ जाते हैं एक बार स्टोरी टाइम पे आ जाते हैं. मुझे पहले तो अपना स्टोरी टाइम करो इधर कि ये इतनी स्टोरी सुना दी आपने इंस्टाग्राम पे, बट आई ट्राइड गूगलिंग, ये देखा वो देखा, बट इट्स वेरी ऐसा लगता है क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ मैं किसी ऐसे खुफिया सीआईए टाइप बंदे के बारे में. व्हाट डज तीर्थक डू? माई पेरेंट्स लिव इन द्वारका. आई नाउ लिव इन जी. मैं पहले बता रहा हूँ, मैं ये बोलूंगा तो तू जज करेगा. आई नाउ लिव इन जी के. ठीक है, मैं गोल मार्केट में पला बड़ा हूँ. सरोजिनी नगर में रहता था उससे पहले. अच्छा, ये अब आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो? हाँ, ये मेरा जस्टिफिकेशन कि मैं वो नहीं हूँ. ये मैं देख के अब मैं जीके ही मान रहा हूँ. अब आप नहीं भी बोलते, मैं जीके, एम ब्लॉक, साउथ एक्स वो वाली मान रहा हूँ. बट कैसी मतलब दिल्ली वाली लाइफ क्या थी बचपन से? यार दिल्ली की लॉन्डो की वाइब तो अलग ही होती है ना. वो नासा वासा की वाइब नहीं होती है. तो वो फ्रॉम दिल्ली सरोजनी नगर टू नासा, क्या वो ट्रांजिशन पॉइंट क्या था? क्या ये पेरेंट्स का कुछ दबाव था या कुछ इन्फ्लुएंस था? व्हाट वाज नहीं, दैट? ये एक्चुअली दैट्स वन थिंग दैट आई हैव बीन वेरी लकी विद एंड आई हैव सेड दिस इन लाइक अदर प्लेसेस एज वेल. आई हैव नो शेम कि whatever I am because of my parents and because they didn't tell me to do anything. परफेक्ट. ठीक है, they always showed me what they are like. राइट. Like my dad used to come home, and by the way, just as a prelude, I grew up in like a lot of poverty. So मतलब ऐसे कुछ था नहीं हमारे पास. But eventually both my parents worked very very hard, and eventually like by the time like I was 10 years old, my brother was born. By that time we were finally getting like into our middle class life. गॉट इट. Right. So but उसके पहले काफ़ी ऐसे हालत टाइप्स. तो we never had anything, but like what my parents did was like वो होता है ना शो बिजनेस में show don't tell. So that's the kind of parenting my parents did. Right? Okay. Like my dad would come back from work. He wouldn't like turn on the TV. He would sit with a book. He never told me to sit with a book. इंटरेस्टिंग. He never told me कि टीवी मत देख, पढ़ाई कर, ये वो कर. So वो it seeps into you as a kid. कि you want to emulate your parents, you want to copy what they're doing, because like up till a certain age they're the coolest fucking shit, right? I don't know if I can cuss on here. So like there's the shit, right? Right. Like your dad and your mom, they know all the answers to life. Correct. Up till a certain age. उसके बाद लगता है अरे मेरे को पता है. So मुझे मत बताओ. हाँ तो but before that you think like in the formative phases, like you feel like and you try to copy them. And I did that. तो कभी कुछ बोला नहीं. But also like I had a very weird like childhood, right? Like in terms of like cultural context, because
I am a Bengali. Grew up in a proper Bengali household. Okay. And I went to like a really fancy. I was a scholarship kid, but I really went to a really fancy school in Delhi. And like वहाँ पे मतलब अमीर बच्चे आते थे अच्छा. maximum, Right. right? And it has a lot of heritage, that school. So it's like, you know, Which school is this? St. Columba's. Got it. Yeah. वो शाहरुख खान का स्कूल जो अच्छा. अच्छा, this is the. ऐसे समझ आता है लोगों को. हाँ तो द स्कूल वाज यू नो वेरी क्या कहते हैं उसका यार वेरी अच्छा, बड़ा हाँ बढ़िया. एरिस्टोक्रेटिक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ स्कूल. Very heritage driven. हाँ मतलब, हेरिटेज ड्रिवन heritage टाइप. driven. हाँ मतलब इट वाज द फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट क्रिश्चियन स्कूल इन दिल्ली. सो लाइक ओल्ड यू नो. सो उस एक तो जा मैं उस पे रहा हूँ. वहाँ पे मिल मेरे को पंजाबी बच्चे रहे, हरियाणवी बच्चे रहे मिल रहे हैं मुझे, उनसे दोस्ती हो रही है. मैं घर आ रहा हूँ तो मेरे बंगाली पेरेंट्स बुक्स पढ़ रहे हैं. तंग हो गया वो. हाँ तो लाइक इट वाज अ वेरी मल्टीकल्चरल काइंड ऑफ लाइक अपब्रिंगिंग. Okay. My two best friends, actually they were both girls, they were not from my school, but my two best friends that I had in my childhood, Lipika and Aisha, one was Punjabi, one was like a Muslim, Acha. from North India. So it was this like very diverse kind of khichdi of experiences. And you know in those years like you're kind of like trying to latch on to someone. पहले parents होते थे, उसके बाद दोस्त होता है, उसके बाद कोई superstar होता है जिसके तुम मतलब you model yourself against Right. after. So मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था. एक दिन मेरे को शाहरुख खान बनने गए, दूसरे दिन मेरे को पता नहीं रिचर्ड फाइनमैन बनने गए. मैं क्या बनूं मैं तो बीच का कुछ बन गया. And then it wasn't until after like I left home and started having my own experiences that I kind of started developing कि ठीक है, I like reading books, but I also like going to bars and drinking and you know having a good time with my friends. I like reading and watching like classic theater and like listening to like classical music. But I also like 2000 का हिंदी pop song. बादशाह. हाँ बादशाह पसंद है नहीं, मुझे वो नहीं, भाई. बादशाह नया वाला बादशाह. अच्छा नहीं. अरे यार कट. हनी सिंह बादशाह. अरे नहीं ये वाले आप सुने हैं? हाँ, इस सुने. जनरेशन में थे आप? थे तो सही यार. हनी सिंह ना वो मेरे इलाके का लड़का है. हाँ तो वो प्राइम था आपके में तो बिल्कुल भाई 10th 11th 12th was like everyone was like Honey Singh, or that was Honey Singh before his cultured phase. Out of all this khichdi, like I picked up things that I like, and the good thing is like this is where like my parents' upbringing comes into play. Is like they never told me कि ये अच्छा है ये बुरा है. कोई moral value associate नहीं है किसी चीज पे. Got So I was free to pick up what I wanted to and make something new out of it. Okay. Because see, I truly believe this, and I hopefully one day will probably have kids, and hopefully I'll be able to transfer this to them, which is pick your own shit. Because like I might have been talking about dogs, maybe not children, maybe dogs. नहीं Oh, this is an advice that I would give my dog मतलब every day of the week कि भाई please उठा ले. अच्छा. No, but it's kind of true, right? It's cliched, but it's said so many times in so many different forms. Ki if you want to do something new, you can't just copy, right? Like you have to, and there's not a lot of new things to be made. Generally speaking, you have to combine different things to make something new. I am not original. I am वो कहते हैं ना जनपथ मार्केट में ओरिजिनल कॉपी है. मैं वो हूँ. That is what I think I am. I picked up like very interesting bits from different personalities. I'm a little bit of मतलब तौबा मतलब नहीं हूँ, but मैं ऐसे सोचने में अच्छा लगता है मेरे को कि I'm a little bit of Richard Feynman, little bit of like यहाँ पे सलमान खान, little bit of नहीं actually नहीं हो सलमान खान. I take it out. फ्लो में बोल दिया मैंने. अब तो यही जाएगा. अब मैं ये हुक में डालूंगा मैं. तीर्थक साह सलमान खान. मैं शाहरुख खान बोलने वाला था यार, मुंह से निकल गया सलमान. एनीवे तो ये सीन है. लाइक मैं थोड़ा सा मतलब देसी हूँ, थोड़ा सा मैं देहात हूँ, थोड़ा सा मैं अपस्केल हूँ, थोड़ा सा मैं कहीं पे भी फिट हो जाता है यार. Which is good. Very malleable is what you're saying. Very malleable. But ये जो ओरिजिनल कॉपी वाली बात बोलना आपने, ये तो मैं बहुत ही अच्छे से ट्रूली बिलीव करता हूँ कि सब लोग ऐसे ही हैं. इनफैक्ट सिंस लाइक आई रन अ क्रिएटिव एजेंसी, हमारा तो काम ही है कि क्रिएटिव थॉट्स लेके आना. बट मुझे लगता है इट्स अ फेलियर इफ यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट अ ट्रूली ओरिजिनल थॉट, बिकॉज देयर इज नो ट्रू ओरिजिनल थॉट. एवरी थॉट इज अ पैदा होते तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा तुमने, तो योर थॉट्स आर अ कल्मिनेशन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू हैव थॉट ऑफ कंज्यूम्ड बिफोर. So I think everybody, in fact, अगर तुम कुछ भी creative काम करते हो तो it comes down to, and because of this
is why the kind of content that you consume, the kind of, when I say content, not just Instagram पे reel नहीं, जैसे आजकल के एक दो बच्चे content सुनते reel नहीं, books, podcast, content, movies, anything and everything that you consume, it will shape you. Yeah. Everything. Every little conversation is also content. Correct. Right? I mean, the conversation that we are having right now, right? It's content for me. It will become a different form of content for people For the later. people who are watching. But this is right now, this is content for me, right? Like I am learning from you, right? So this is also shaping me. Sometimes in good ways, sometimes in bad ways, but it always does. So yeah, I mean, content is everywhere. No, it makes a lot of sense. And for the audience, we have actually recreated our phone conversation today on the podcast. And I'll summarize it for you. And I truly believe in what you said. And the question that I asked was actually contrary to my belief, is that I really don't care about virality at all, in fact. Right. Right. And how I create It's a very content. useless thing. It's a very useless thing, right? For the audience. And this question was for the audience because everybody asks you this question, ki virally dance you and it's like, chuck that. पूरे courses बिक रहे हैं यार कि how to become viral, do these things to become viral. Correct. Chuck these, वो clickbait है. हाँ. At the core, there are 2-3 things. There is, of course, there's a threshold of quality, whether that's, technical quality. Yes. Second is there are fundamentals of what humans like. Yes. Storytelling is one. Yes. Value is another. Education is another. Yes. अब तुम ये सब चीजें, entertainment is another. I love people who are funny online. I love them a lot. Like I like them a lot better than people who are just coming in front of the camera doing XYZ, because I feel that is great for now because वो चल रहा है अभी. But fundamentally, that's not something that works. Yeah. Right? Fundamentally, these are the things that will work. So if you're doing things that are fundamentally aligned with what humans like, have like a threshold of quality in terms of like technical quality, and you have the craft to do it. You know how to speak well. You are presentable. Combine karo, eventually you'll grow. Yeah. Right? Yeah. You might grow with mediocrity. And when I say you'll grow with mediocrity, I don't mean to mediocre. I just say that you'll just grow at a normal pace. Like you actually put this in a really nice way, and I'll probably be using this like many years down the line as well. I could never find the words to put it in, but you put it on the phone call the other day, which is, all these tips and tricks that people tell you, right? Ki hafte mein this is the prescribed number of times to post, right? Like these are the prescribed times to post in a day, or these are the types of एक चीज है यार मेरे को, which I understand the benefit of that. I'm not shitting on any of this, by the way. I'll come to the point in just a second. This works, but what Ayush said, which I really like, is that this is the average way to grow. Those were your words, right? correct. This is not the worst way to grow, and this is not the best way to grow. This is the average way to grow. Therefore, people are selling it because it will work with most number of people, most number of content creators. It will work with most number of cases as well, situations, because a lot of content creators are coming from different situations. But अगर ये 3-4 चीजें करोगे ना, तो you will grow on average. But this is not the best way to grow. Correct. Sorry, continue. I just wanted to say that And because that was very beautiful. So the reason I said this, I'll just add to that, is because best way ना कोई बताएगा नहीं, वो खुद implement करेगा. Average way is something कि average way grow करते हैं. जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर रोज रील डाली, फिर एक दिन आया और 100 के बढ़ गए, बॉस तू कुछ अलग कर रहा होगा एवरेज से, तभी होगा. But I love average for 2 reasons. पहला, कोई भी कर सकता है. दूसरा, थोड़ा साइंटिफिक हो जाता है एक पॉइंट के बाद. When I say scientific, you can track that. It's mechanized. And I do feel कि बॉस अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो कोर्स वो YouTube वीडियो देख के वो कर दो एवरेज, and learn during that process to be exceptional. Yes. Right? Yes. Learn the rules before you break the rules. Yeah. So yeah, definitely agree with that. I see, again, one of the reasons I'm not a good person to talk about social media and like what works and what doesn't as content creators is that I come from a place of privilege in this world. I don't need to be on social media. I don't need my reels to work. ये मेरी रोजी रोटी नहीं है. Right? Like मेरे घर पे 3-4 लोग नहीं हैं who are depending on me to bring money in from social media, which is it must be a tremendously taxing thing for someone who does this full time. I can't even imagine the amount of stress that they must face. Because तू सोच ना यार कि तेरा तो फिर भी you have other sources of income. Just imagine if someone is only earning from their content, their sponsor. किसी दिन चैनल हैक हो गया, किसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गया, बैन हो गया,
किसी दिन उन्होंने एल्गोरिदम चेंज कर दिया, गया. So many ways your source of livelihood can be fucked. I have the privilege of not having to depend on that. I have the privilege of doing social media for the fun of it, right? And therefore, I have the privilege of breaking the rules. But again, like you said, I have followed the rules in my life, in my larger life. I've done some things, I've gotten to some mediocre places, whatever amount of knowledge I have, and now I'm playing. अभी मैं खेल रहा हूँ. तो मेरे से मत सीखो. मेरे से कुछ घंटा सीखने को नहीं मिलेगा. If you want to learn, go to the Instagram coaches, social media experts who know this shit and who will get you to some place first, and then you can break the rules. Correct. So don't learn from people like me. I'm the weird kid in the park who's just like eating his own nose and like doing something in the corner. Oh my god. I seriously don't give a fuck. But so Instagram gave me the Reels feature this February this year. Before that, I didn't have the Reels feature for 2 years. Right? उनको पता था दे देंगे तो फट जाएगा. हो सकता है. हो सकता है. But I also think like we had a personal enmity. I like to think Zuckerberg and I कि वो बोलता है कि अच्छा पहले लोग IGTV बना रहे थे तब मैं भी बनाता था, ठीक है. तो वो बोलता था कि भाई IGTV है बट कीप इट टू 2 मिनट्स. मैंने डाल दिया 5 मिनट का वीडियो. मैं कर सकता था एडिटिंग करके छोटा, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं मेरे में जिद है. तू बोलेगा मेरे को कितने मिनट का डालना है, नहीं देखना है मत देख. But I have the privilege of doing it. So I'm not the best person to talk about this, right? Like I'm fuck all, like don't follow my advice. Makes sense. But what I can give you advice about, right, is content in general. You remember like what we were talking about, like Yeah. everything is content. Correct. I can teach you how to speak, right? I can teach you how to speak, how to write, how to talk in a way that I will grab your attention by the collar and I will not let you go until the last word has been said by my mouth. Correct. And that is fundamental. That is fundamental. वो social media का driver है ही नहीं. That is not dependent on platform. That is not dependent on medium. People who are funny, comedic timing is a fundamental asset. चाहे तू on stage कर रहा है, live कर रहा है, recorded कर रहा है, TikTok बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर तेरे पास comedic timing नहीं है, people won't find you funny. Correct. Jokes तो आते जाते रहते हैं. तू आज एक अच्छा जोक लेगा, कल टट्टी जोक लेगा. एक आपने बात बोली थी कि 2 तरीके हैं सोशल मीडिया पे आने के. एक तो है कि तुम एक फंडामेंटल स्किल ले रहे हो और फिर सोशल मीडिया पे आके उसको हार्नेस कर रहे हो. दूसरा है कि तुम बस सोशल मीडिया पे आ गए हो, अब तुम कोई स्किल बना रहे हो, जो भी मतलब whatever the other processes. The first one is so much more powerful because There is only one way. The other way doesn't work. The other way doesn't work. It does not work. It doesn't work for मुझे I disagree with you. मुझे लगता है काम करता है because आजकल हैं क्रिएटर्स, आजकल पर्सनालिटी बेस्ड क्रिएटर्स का बहुत बड़ा मार्केट. उस दिन हम बात कर रहे थे कि देयर आर पीपल शूटिंग व्लॉग्स, राइट? और वो व्लॉग्स Can you tell me with absolute certainty that the most famous ones, the ones who are like actually 1% of the cream in that category, they don't have any actual skill outside of that? No, that you're right. Absolutely you're right. That वो जो टॉप निकल के आएगा उसके पास तो लाइफ में सोशल मीडिया के बाहर कोई एक्सपीरियंस, कोई कुछ तो है ऐसा. बट एट द सेम टाइम आगे जाके मुझे लगता है और क्रिएटर्स आने वाले हैं, स्पेशली पीपल आर पर्सनालिटी क्रिएटर्स. पर्सनालिटी क्रिएटर्स का मतलब है कि लोग जो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं, जो शायद 15 साल की उम्र से दे हैव जस्ट बीन स्ट्रीमिंग एंड या वो उसने शुरू ही अपनी लाइफ कंटेंट से करी. वो कंटेंट देखता था, वो कंप्यूटर पे गेम उसने चलाया, स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, 5 साल बाद ही इज वेरी पॉपुलर, राइट? सो दैट हैज बीन हिज लाइफ्स कॉन्टेक्स्ट, whereas your life's context was all these things that you just talked about. But sorry. ये जो तूने बोला कि वो स्कूल से कंप्यूटर चलाता है, इज एन एक्सपर्ट इन गेमिंग और स्ट्रीमिंग और व्हाट, अबे यही तो है लाइफ का एक्सपीरियंस. यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये दिस इज नॉट सोशल मीडिया डिपेंडेंट. If someone is an expert pro gamer, No, I don't mean a gamer. वो तो pro gaming होगी ना. हाँ ठीक है, बट वो भी लाइफ एक्सपीरियंस है ब्रो. मैं क्या कह रहा हूँ, I'll tell you. Then how do you differentiate like somebody? हाँ उसी पे आ रहा हूँ. So I'll come with the other side first because the first side is fairly obvious, but I'll tell the other side so that it doesn't confuse. The other side is I come onto social media, मुझे अब कंटेंट क्रिएटर बनने का है, ठीक है.
तो मैं रील्स देख रहा हूँ, रील्स टैब पे जाके मैं रील्स देख रहा हूँ, पहला वाला आया कि सम स्पोर्ट्स पर्सन इज शोइंग ऑफ देयर बॉक्सिंग स्किल्स, ठीक है, अबे ये तो नहीं होगा मेरे से, चल। नेक्स्ट आया कि कोई गाना गा रहा है, बहुत प्यारी आवाज़ है, मेरे तो गाना गाना नहीं आता, स्क्रोल, ठीक है। नेक्स्ट कोई कुकिंग, कुकिंग नहीं आता, चलो छोड़ो। नेक्स्ट आया विष्णु कौशल, सॉरी विष्णु, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, विष्णु कौशल डूइंग अ फनी स्किट, ठीक है, अरे ये तो कॉमेडी कर रहे हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ग्रुप का मैं भी फनी लौंडा हूँ मतलब। ठीक है, मैं फनी वीडियो बनाऊंगा। या फिर ये अरे कोमल पांडे फैशन, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कपड़े पहन सकती हूँ, इसमें क्या है, मैं कपड़े पहन के दिखाती हूँ। If that is not something that you would do without the existence of social media, then that is the second category. दिस इज हाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस कि सो समरी ये रही कॉन्वर्जेशन की कि दो तरीके के लोग हैं। एक इंसान वो है जो सिर्फ सोशल मीडिया है इसलिए वो एक्टिविटी कर रहा है, दूसरा इंसान वो है जो एक्टिविटी रिगार्डलेस कर रहा है कि सोशल मीडिया होता या ना होता। एंड यू थिंक दिस इज द राइट वे टू अप्रोच? दिस इज प्रॉब्ली नॉट द राइट वे टू अप्रोच कि तुम उसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हो। One of two things will happen if you choose the latter path. Okay, I'm not saying you can't. I'm saying कि one of two things will happen. Either you will burn out because it's not something that you actually want to do or actually are passionate about. So even if you get like one viral video, right? After a certain time, like क्या करोगे तुम? And the second thing is your audience will find you out. Because if you're not genuine on social media, audience हमेशा figure out कर लेती है कि you are not genuine. ये बुलशिट कर रहा है इंसान ये हवाई बातें करता है, या ये भाई एक्चुअली में अच्छा नहीं है इसमें, ये ऐसे इधर उधर से लेके बात कर रहा है, ठीक है, तो वो दिख जाता है। ऑडियंस कैन स्मेल बुलशिट फ्रॉम अ माइल अवे। सो one of two things will happen if you choose the latter path. सो यू सेइंग ट्राई करो, चीजें ट्राई बिल्कुल करनी चाहिए, Oh yeah, बट absolutely. इट्स जस्ट दैट कि सोशल मीडिया वो प्राइमरी ड्राइवर नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब जैसे अब अभी when we had this conversation last time, you said कि you disagreed with me and you said कि no, but like kids or like young professionals, like when they're starting out, they should try as many things as them. Absolutely. I agree with that. I'm the biggest proponent of that. If you go and like read my stuff or like even my book, like my almost entire book is plug. ये सब यही तो सब नहीं सिखा के भेजा मम्मी ने घर से। तो नहीं, but if you read my book, like the subtext of that in many chapters is this: do many things, build multiple mental models. It is an excellent thing to do. It is something that is unique to us humans. Do it, right? So I am the first proponent of that. My problem, however, with that is don't do वो social media के बिना करना. If you're actually doing this to improve yourself or just try to figure out what you're passionate about, leave the phone aside. Go do it. You want to try singing? Try singing. बैठ के गा, किसने मना किया? फोन क्यों उठा रहा है? फैशन ट्राई करना है? Try it. Show your friends. Host a little like fashion party in your house. Bring your friends over. Have snacks. Do a fashion party. You know, design clothes for your friends. फोन उठा के क्यों कर रहा है? तो जो करना है करना भाई, तेरे को डांस करना है, जो भी करना है, और तुझे फोन उठा के भी करना है वो भी कर, बट डोंट डू इट विद द एक्सपेक्टेशन कि अब से मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा या मुझे ये एक्स नंबर ऑफ व्यूज चाहिए, राइट? लव फॉर व्हाट यू डू एंड नॉट वेयर यू डू इट। if social media is the primary driver of you trying to figure out what you are trying to do in life, then you're not actually trying to figure out what you're trying to do. You've already figured out what you want to do, which is social media. Now you're trying to find कि हाँ ठीक है ये तो मिल गया, but करूँ क्या इसमें? It's like getting a job without a job description. It's getting a job without a job description and with no degree, no skills, nothing. मैं जाके ऑफिस में बैठ गया पहले, कि अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा इस ऑफिस में करते क्या है यार ये लोग, ये कंपनी करती क्या है, मैं क्या करूँ, मैं फाइनेंस हूँ, मैं मार्केटिंग हूँ, मैं सेल्स हूँ, क्या हूँ मैं? ये ऐसे थोड़ी होता है यार।
हसल कल्चर के बारे में ना मुझे बड़ा पसंद है बात करना। ये लोग ना अब जैसे मुझे ना देर आर डेज, जैसे कल मैं बड़ा हेट कर रहा था हसल कल्चर को, क्योंकि ना कल की मीटिंग्स अच्छी नहीं गई थी। अच्छा। मैंने कहा अरे भाई साहब 9 घंटे से मैं मरा रहा हूँ अपनी, सुबह से कैलेंडर ऐसे 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 दिख रहा है मेरा, एक स्लॉट एक स्लॉट एक स्लॉट एक स्लॉट, एंड रात को आके डिडंट हैव अ वेरी गुड वर्क डे, व्हिच इज सो नॉर्मल एट दिस पॉइंट। बट टुडे आई हैड अ ग्रेट डे। आई वाज लाइक भाई यार तो हसल हो गया, एक सुबह एक पॉडकास्ट, मीटिंग्स रात को एक पॉडकास्ट, कल सुबह। सो आई थिंक डेज, बट मोर और लेस मैं रियलाइज करें ना कि भाई जो तुम्हें अभी नेट नेट अगर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, अगर मान लो नेट मान लो हमने 1 साल लिया तो तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ऑफ वेल्थ, पॉजिटिव ऑफ फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, व्हाटएवर, भाई तुम लाइफ में ठीक कर रहे हो, तुम कैसे भी पहुंच जाओ वहाँ पे। डेली डेली देखोगे ना, मुझे लगता है जैसे वर्क लाइफ बैलेंस लोग मुझसे पूछते हैं, आई थिंक आई हैव अ वेरी Yes. स्टेलर वर्क लाइफ बैलेंस। मुझे ऐसा लगता, मैं पहले बोलता था लोगों को मेरा खराब है, मैंने पिछले 2-3 हफ्ते से बोलना शुरू करा भाई मेरा तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि मैं 2 हफ्ते स्पेंड मार के 2 दिन अपने फैमिली के साथ क्या बढ़िया स्पेंड करता हूँ। Yeah. I almost said something, but I won't. But I'll tell you in different words. There are some people who, when you talk to them about work-life balance, and I think it's most people, when you talk to them about work-life balance, they're thinking in terms of the time scale is days. कि आज का मेरा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहा या इस हफ्ते का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहा. बट व्हाट यू सेड इज व्हाट आई हैव बीन प्रीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वर्क लाइफ बैलेंस is about an aggregate, right? It's not daily कि आज मैंने 8 घंटा काम किया, 2 घंटा सोशल मीडिया किया, 3 घंटा. ये जो एप्स आते हैं ना, ये जो उड़ा दो हाँ बिल्कुल, हाँ समझ गया मैं। हाँ कि आज मेरा स्क्रीन टाइम इतना था. हाँ क्योंकि मैंने 6 घंटा मम्मी के साथ स्काइप किया, तो मम्मी निकलो, बंद करो हाँ कॉल, भाई अपनी मेरा स्क्रीन टाइम। मेरा वॉच बता रहा है भाई हो गया मेरा स्क्रीन टाइम. क्या बकवास है. So obviously, see, that sounds ridiculous, and I'm sure no one does that, right? But I'm telling you, it sounds ridiculous because I've taken that same concept and I've खींच के ले आया मैं to a place where you can see the ridiculousness of that, of looking at any kind of balance on short time scales, करेक्ट। right? You can't. Life will kick your ass. Right now, I'm running on very little sleep, and I haven't eaten well this past week. I've been trying to lose some weight. I've gained some weight. घर पे बैठे बैठे हो गया है. And I have been very good with my diet for the last 2 months. And then suddenly 1 week it's just been junk because I'm traveling. I'm in Bangalore. But यार कल को जैसे मैं गया with my work people to eat out, right? तो मैं वहाँ पे जाके अगर मैं बोलता कि नहीं मैं सिर्फ सैलड खाऊंगा, आप लोग पिज्ज़ा, मैं शेयर नहीं करूँगा, ठीक है, विच इज़ फाइन. दैट इज़ ऑल्सो फाइन. आई एम नॉट हेटिंग ऑन पीपल हु डू दैट. That is also fine. But if you're just doing that because your watch or your app has told you or your planning calendar has told you, that is bad. All I'm saying is think for yourself. If you want to do it on a daily दिल से basis, आ रहा है तो कर लो। हाँ, if you want to do it on a daily basis because you feel like doing that, great. I wish I could be you. But I'm not, so I won't. And I'm not going to let my schedule be dictated by either a watch or an app or $1,000 motivational speaking course. I'm not. लाइफ कोच आ गया, आपने सुना आजकल? क्या आ गया? लाइफ कोच। हाँ वो तो बहुत पहले से था. यार ये तो मुझे तो अभी पता चला, मैं तो बहुत ही, मैं किस दुनिया में जी रहा था यार मैं। मुझे लोगों ने बताया कि भाई, अच्छा बड़े बड़े ना साइंटिफिक तरीके से बताया लोगों ने कहा कि लाइफ में डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फटीग। तुम डिसीजन लेते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तो तुम क्या करते हो, तुम सारे डिसीजन आउटसोर्स करते हो। मैं कहा तुम कर क्या रहे हो लाइफ में फिर? तो ये इंसान डिसाइड करेगा कि भाई आज तीर्थक सुबह सैलड खाने वाला है, दोपहर को पनीर खाएगा, शाम को चिकन खाएगा या जो भी खाएगा, फिर सुबह उठ के वो वाइट शर्ट पहनेगा, ये वाले जूते, लाइक इवन माइक्रो डिसीजंस पीपल आर आउटसोर्सिंग। भाई ये ना, ये पता है मेरे पास भी लाइफ कोच था बचपन में, मम्मी. वो बताती कि मैं सुबह क्या खाऊंगा, क्या दिल्ली पहनूंगा. आ गया ये तो। नहीं यही तो था, मतलब तूने यही तो डिस्क्राइब किया. यूएस से दिल्ली आ गया हाँ। तो यही तो था भाई, तूने यही तो डिस्क्राइब किया कि मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट क्या खाऊंगा, वो बताती थी. बिल्कुल। शर्ट पैंट वो बेड पे रख के जाती थी प्रेस करके कि भाई तू यही पहनेगा आज. मम्मी नहीं पहनना, चमाट यही पहनेगा, ठीक है. लंच में यही खाएंगे, नहीं खाना सो जा जाके. यही तो था लाइफ कोच. आई मीन दिस इज व्हाट यू डिस्क्राइब जस्ट. नहीं ठीक है, आई एम गोइंग ऑफ ऑफ योर फेयर, डिस्क्रिप्शन. नो आई लाइफ कोचेस आई एम नॉट हेटिंग अगेंस्ट लाइफ कोच. आई एम गोइंग ऑफ लाइक व्हाट ही इज डिस्क्राइब्ड इज माय मॉम. फेयर है, वो प्यार की बातें करते हैं थोड़ी सी।
चपेट से प्यार पे आते हैं. क्या क्या थॉट्स है लव लव पे बात करते हैं थोड़ा सा प्यार के बारे में. क्या तीर्थक की लाइफ में प्यार की डेफिनेशन क्या रही है? व्हाट इज लव टू यू राइट नाउ? To me, love right now is the person that I'm dating. Okay. Right. Earlier, I used to have like a different definition, Which is? which is like a more like very immature, childish kind of definition. Ki, everything must be the way I want it. Right. Like, for example, छोटे छोटे examples. Right. Like, if I like doing certain things, like if I like watching horror movies, she must like watching horror movies too. But I don't think that works. I don't think that works. I think opposites don't work. I think complementary works. Okay. There must be a common base, right? Which you have to agree on. It's very important. But then you must be complementary to each other. You can't be exactly the same and you can't be opposite. Complementary sits somewhere in the middle. I know it sounds like a lot of like faff, but there's no easy way to explain this, right? Like I'd have to take practical examples, right? Like, okay, for example, I and my girlfriend and I, we both are like crazy about art. Okay. Does that mean we have to have the same favorite artists? No. If she has, if her favorite artist is Rembrandt and my favorite artist is Van Gogh, right? We can teach each other about each other, and we don't have to end up liking the other person's artist, right? Like, but we can sit there and we can exchange, we can teach. Problem कहाँ पे होता है कि if we both like Van Gogh, then after a point it gets stale. We have nothing left to talk about. We have nothing left to teach each other. We have nothing left to introduce each other to, right? Like the spark goes out. तो सेम भी नहीं चल रहा है ऑपोजिट भी नहीं चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है. Huh. And if we both then like one person likes art, one person hates art, that also doesn't work, right? So I think love is a lot of things, but what I've told you is how love can exist. Without this, love doesn't exist. Attraction exists, sexuality exists. Love doesn't exist without this. एकदम सटीक आंसर अगर मैं पूछूं आपसे तो जैसे दिस साउंड्स ग्रेट एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस. हाउएवर पहली बार तो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया है उसको. हाउएवर मैं यार इंस्टाग्राम पे बैठा हूँ, मेरे को बंदी पसंद आ गई है, हमने बात करनी शुरू कर दी है. देयर इज फुल ऑन सेक्सुअल अट्रैक्शन, वी बोथ लाइक ईच अदर. बढ़िया बातें हो रही हैं. शुरू में तो वैसे ही तुम कॉम्प्लीमेंट्री फलाने का तो सोचते भी नहीं हो, राइट? तुम सोच रहे हो कि भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं, फील आ रही है कि नहीं, फील वाइब आ रही है कि नहीं. ये रिलेट कर जाएगी ऑडियंस, वाइब आ रही है. सो एट दैट टाइम इन दोज फर्स्ट 3-4 months दिस इज अमेजिंग. नाउ माई क्वेश्चन इज कि यार जो आपने बोला, डू यू ग्रो इनटू दैट फेज या फिर वो शुरू से ही मैच होना चाहिए? वो अगर शुरू से मैच नहीं होता तो बाद में ब्रेक हो जाता है. How can you grow complementariness? That is your personalities being complementary. या तो you're changing the other person or the other person is pretending to be complementary to you. You can't develop this. That is what I'm saying. Like it either exists or not. मुझे लग रहा है गलत सवाल पूछ लिया मैंने. वैसे इतना मुझे लगा था क्या बढ़िया स्मार्ट सवाल पूछ रहा हूँ, बट नो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. एसेंशियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि क्या शुरू में तुम्हें पता होता है कि भाई ये नहीं चलने वाला, पर तुम चला लेते हो फिर भी? होता है कभी कभार. होता है ना? तो क्यों होता है? व्हाट डू यू थिंक? हुआ आपके साथ? हुआ मैं एक्सपीरियंस तो लग रहा है. नो कमेंट्स. एक्सपीरियंस तो लग रहा है. नो कमेंट्स. ये लड़कियां मरती तो होंगी, मतलब ये वो कहते हैं ना इस चेहरे पे लड़कियां मरती तो होंगी. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है आपकी, बोल सकते हैं कैमरा पे? 10, 15? I'm asexual. 17 and a half. I am asexual. The first time I met a girl was my current girlfriend. I have never met, talked to or seen any other girls. ये मैं भी ये बोलता हूँ. सही है. नो आई कंप्लीटली I will reject this high five. No. ये वो वाला देखा हमने. दिस वाज बट नहीं, but मतलब in all seriousness, right? I've had 4 relationships before my current one, and yeah, I mean, yes, maybe I'm talking from experience. Maybe I'm talking from experience of other people who around me who I've seen, but it doesn't matter because there's a common experience. I'm sure a lot of people will identify with this, and not only just like ladki kaat ke chali gayi, tu bhi kaatta hai. You're also the same. I'm also the same, right? Like we have also done bad shit. Like we have, more often than not, it's the guy. ऐसा है क्या? मतलब more often than not in this department. Like of not like
I genuinely do think at the same age, like in our teenage years, girls tend to be a little more emotionally mature than guys on an average. वो तो मुझे अभी 25 साल में भी लगता है वैसे हाँ, मतलब because they have to be. राइट Because it's just the way our society structured, they have to like fend off so many things that they develop their emotional maturity. I think, and I'm not a girl, so I can't speak for women. You need to ask. हम ये काफी assumptuous statements है हाँ, मतलब मतलब ये at this मैं point I'm not a woman, right? Like you'll have to ask a woman if this is true. But this is what I feel that I've noticed that women are they become more mature quicker in life. लगता तो ये मुझे भी है मतलब दिस इज ऑफ कोर्स माइट नॉट बी लाइक अब स्टार्ट तो पता नहीं देखो बट जितनी लड़कियों के आसपास मैं रहा हूँ मुझे दिखा है कि भाई वो बहुत पहले दे वर एबल टू प्रॉब्ली Yeah. ईक्यू बहुत हाई होता है उनका बहुत टाइम पहले से IQ भी high होता है, and I think it's the overall like maturity that I'm talking ओवरऑल about. ग्रोथ इज It's faster than boys, and I think it's spurred on by like a need for protecting themselves. ये इसको स्टार्ट भी है क्या हम जो बात कर रहे हैं आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ. So going back to the original question, what I was trying to say is that yes, I've seen ki it doesn't work if that complementariness, I don't know if that's a word, but if that is missing. वो कभी कभार ना तुम मतलब फाइट मार के बोलते हैं ठीक है यार देख लेंगे, you know. is that you being lazy like यार No, sometimes it's different things. Sometimes it's your lust taking over, right? Which is fine. ठीक है यार, we're visual creatures. It's fine. I understand that. My point isn't with how it's starting or why it's starting. Everyone will have a different reason. Some people are fooling themselves. Some people are fooling others. Some people are in havas, as they say. लस्ट Right? हाँ. लस्ट हवस हाँ. तो दिल्ली वाला लस्ट है हाँ ये दिल हाँ तो but whatever the reason, my point is that thing, I mean, it won't last unless you are complementary. A relationship that starts with lust can also last, but then if you reverse engineer it, you will see that they had complementariness to begin with. Complementary can also be like between two idiots. It doesn't need to like when people hear like me say complementariness, I've heard people like they're like कि साइंस क्यों घुसा रहा है हाँ लॉजिक मतलब क्यों घुसा रहा है हाँ प्यार मतलब में कि these are two idealistic people who are complementary for each other. This is like the Notebook kind of love. राइट मैं उसकी बात कर नहीं रहा हूँ. एक चूतिया और दूसरा चूतिया उसमें भी प्यार हो सकता है. they can also be in their चुतियापा, they can be complementary, right? That will also last. और ये प्यार मुझे बात बताओ शुड यू टुडे डेटिंग एप्स राइट लाइक how they like to put it is they've democratized love right my point is should one go out and very very actively find for love or should one go out and actively find for friendships और उसमें प्यार हो जाए तो हो जाए नहीं हो तो ठीक है I think people should stay home and not look for anything. घर पे रहो सब, पढ़ाई करो. ये ना वो बोलते हैं इंसान जिसकी गर्लफ्रेंड होती है ये वो लोग नहीं बोलते ये जो सिंगल लॉन्डे देख रहे हैं ना ये दिल टूट गया उसके एक मिनट नहीं सर, लेट मी रिबट दैट. ये जो गर्लफ्रेंड बनी है ये घर पे बैठ के ही बनी है. इफ यू वांट टू डाउट मी गो, घूम फिर के यहीं पे वापस आओगे. मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आज जिस मुकाम पे, तो घर से जाओ girlfriend देख लो बना। दुनिया. अरे यार तो ये घर से तो गर्लफ्रेंड बनाना इज अ वेरी 2020 थिंग मतलब 2019 पे आते हैं थोड़ा सा कि मतलब बाहर घूम रहे हो फिर रहे हो I honestly don't think you can force the issue. जो होना है होएगा, चाहे वो घर पे बैठ के हो चाहे बाहर बैठ के हो. आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दैट. कुछ भी करो, जो तुम्हें जैसा लाइफ जीने में मजा आ रहा है वो जियो ना यार. तभी तो तुम्हें और भी लोग मिलेंगे वही करते हुए जो उनको भी मजा आ रहा है, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्रीनेस बनने का कोई चांस है. अगर तेरे को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है और तू घर पे बैठा है ऑनलाइन ढूंढ रहा है, तो तेरे प्रोबेबिलिटी कम हो गया ना टू फाइंड अनदर पर्सन हु लाइक्स रॉक क्लाइंबिंग. करेक्ट तो रॉक क्लाइंबिंग जाएगा वहीं पे मिलेंगे ना लड़कियां रॉक क्लाइंबिंग वाली या लड़के जो भी है. करेक्ट मेक सेंस स्पाइडर से सोशल मीडिया पे आ गया भाई स्पाइडर पे तो तू था, मैं तो कभी था ही मैं नहीं. तो था अच्छा ना, ओके, आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू नाउ. Who told you about spiders? Because that's not even real. मेरा ऐसे शुरू कर दिया मैंने तो that's my way of breaking into the conversation but no actually like I think now that we are ending the podcast what is that one question that you would have asked me ऐसे role reversal करते हैं थोड़ा सा As someone who's been doing social media and content creation for a long time, what is your advice to someone like me who can't be bothered with the rules, who will probably not listen to your advice, right?
who just wants to play on social media, doesn't want to be like a professional social media content creator. But the only thing I care about is making quality content. कि अगर 5 लोग भी देखे तो वो देख के जाए कि भाई क्या क्या देख लिया. My advice to you is A, move to YouTube as quickly as possible without even giving it a single thought. And if it requires you to upload the same videos right now, do it. Primarily because longevity on YouTube is a lot longer. Instagram, the content dies. YouTube, it stays alive. Second advice would be to keep going. People like you, historically, I've seen who don't rely on content. They make stellar content and then they disappear. Right? They disappear because their life is actually a lot more important than social media videos. Don't. It's a gold mine. Right now, 2022, social media is a gold mine. Right? And you're smart enough, तो आप इसको हार्नेस कर लो. राइट आपने अगर इतनी मेहनत करी है, आप कहोगे मैंने कंटेंट में इतनी मेहनत नहीं करी, ऐसा है नहीं. आपकी मेहनत वो जो पहले थी ना, वो कंटेंट की मेहनत ही मानो. योर लाइफ हैज बीन 10-15 years इन द मेकिंग, नाउ you're just telling it to people. Harness the gold is what I will tell. If you have the capability to be a content creator, you know how to speak well, you are very very presentable in front of the camera, you have great stories to tell, and you have the storytelling skills. Ingredients हैं, खाना बना के बेच दो. Right? So my two advices would be YouTube ASAP, because it's a search engine, longevity is much higher, easily monetizable. Second would be harness the gold mine. Your content is good, keep at it, छोड़ना मत. And the best way to keep at it is to batch, is to not rely on motivation, is to not rely on your schedule, because our schedules are erratic. आपके पास 2 वीकेंड हैं, 2 वीकेंड पे 10 वीडियो बना डालो और वो अपलोड करो 3 दिन के गैप पे, महीने का कंटेंट डन. सो दिस वुड बी माय लाइक फ्रेमवर्क एडवाइस व्हाटएवर टू यू. मैं से कुछ भी नहीं करूँगा. आई नो, बट अगर कोई सुन रहा है तो हाँ काम मतलब हाँ listen, this is good advice. Again, don't listen to me when it comes to this. I'm just here to see this whole place burn down. Right? So मेरे metrics से मत चलना. This is good advice. No, that makes sense. Good conversation. Yeah. Thank you so much guys for watching this podcast. काफ़ी बकचोदी करी हमने, दिल्ली की बातें, हनी सिंह की गालियों से लेके सूडो इंटेलेक्चुअल बातें भी करी हमने, बट बहुत ही आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटेलेक्चुअल सॉलिड. तो हम बात कर ही नहीं सकते. हम कर ही नहीं सकते. कुछ बचा है क्या इंटेलेक्चुअल बात? इतना तो सब बोल गए. चलो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.